ऑलराइट, सो ऑटोमेटिक एमएल, ठीक है। ऑटोमेटिक एमएल का जो बेसिक जिस्ट है, ठीक है, वो ये है कि आपके पास आपका एक डेटा होता है, ठीक है, और वो आप अपना डेटा जो होता है ना, वो आप सेंड कर देते हो एक एमएल प्रोग्राम में, ऑटो एमएल के अंदर, और फिर वो खुद ब खुद सारे मॉडल्स ट्राई करता है उस पर। सो आपने बस अपना डेटा देना है एंड इनटू सम प्रोग्राम, और उसके ऊपर वो खुद मशीन लर्निंग अप्लाई करके आपको रिजल्ट्स बता देगा। अब वो करता है कैसे है, वो करते ऐसे हैं कि सबसे पहले इसके तीन स्टेजेस होते हैं। एक होता है डेटा प्रिपरेशन, मॉडल जनरेशन एंड ensemble। डेटा प्रिपरेशन के अंदर वी आर बेसिकली डूइंग व्हाट, we are imputing missing data, we are standardizing numeric features, we are one hot encoding categorical, या फिर अगर ज़्यादा efficiency चाहिए then we are doing count label target encoding of categorical features, जो basically ज़्यादातर Kaggle grandmasters कर होते हैं। and then we have your feature selection and then feature engineering, ठीक है। so feature selection extraction or feature engineering, which is basically combining अदर डेटा सोर्सेज एज वेल। देन हमारे पास मॉडल जनरेशन आ जाती है, और मॉडल जनरेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट सर्चेज होते हैं, क्योंकि हमारे पास मॉडल के अंदर वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमें कौन सा हाइपर पैरामीटर सेट करना है। तो एक होता है कार्टेशियन ग्रिड सर्च, जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल रैंडम फॉरेस्ट है, एंड हमने फॉर एग्जांपल अज्यूम के तीन हाइपर पैरामीटर्स फिक्स कर दिया, सो मैक्स डेप्थ, कॉलम सैम्पल रेट एंड रो सैम्पल रेट, और हमने उसकी ये बता दिया कि मैक्स डेप्थ जो होगी वो या 5, 10, 20 होगी, या तो कॉलम सैम्पल रेट 60 to 80% की रेंज में होगा, या 60 to 82% की रेंज में रो सैम्पल रेट होगा। तो ये ग्रिड सर्च अप्लाई करता है फॉर ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन, और फिर जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है वो आपको ला के दे देता है। ना द प्रोज इज़ दैट इट विल ऑलवेज गारंटी यू कि वो सबसे बेस्ट मॉडल ला के देगा इन हाइपर पैरामीटर्स पर, इन हाइपर पैरामीटर की रेंजेस पर। लेकिन कौन ये कि इट टेक्स a lot of time to process this. So to mitigate that issue, we use not Gaussian grid search but instead random grid search. तो वो basically इसकी computation थोड़ी सी reduce कर देता है। Then हमारे पास होता है tune the models according to early stopping, ठीक है, which means कि आपके पास अगर एक मॉडल लाइक बुरा परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहा है तो आप वहीं पे अर्ली स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव योर हाइपर बेजियन हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन। तो ये बेसिकली होता है कि आप एक मॉडल को ट्रेन करते हो फॉर सम हाइपर पैरामीटर्स, और जो उसका आउटपुट होता है वो आप एक और सर्वरोगेट मॉडल को दे देते हो, जो फिर इसका हाइपर पैरामीटर्स ट्रेन करता है और इसके न्यू हाइपर पैरामीटर्स ला के देता है। नाउ द कॉन्स फॉर दिस इज़ दैट इट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस एंड आप इसको पैरालाइज नहीं कर सकते। देन आपके पास ensemble होता है। ensemble is basically combining a lot of models into one, ठीक है, एंड यू डू दिस बाय बैगिंग और एवरेज। तो बैगिंग और एवरेज वाले पे मैंने वीडियो बनाई हुई है जो उसकी सिंपल होती है। जो H2O AI, क्योंकि ये जो ऑटोमेटिक एम एल की जो भी मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम H2AI। सो दे बेसिकली यूज स्टैकिंग और सुपर लर्निंग, इसको भी थोड़ी देर में देखते हैं। एंड द थर्ड इज ensemble सिलेक्शन। सो दिस इज़ लाइक अ ग्रीडी अप्रोच, जिसके अंदर आप बेसिकली क्या करते हो, बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स डाल रहे होते हो, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करता आप उसको हटा देते हो और फिर दूसरा मॉडल लेकर आ देते हो, ठीक है। सो ensemble सिलेक्शन क्या है कि आप ग्रीडी अप्रोच है, यू आर जस्ट यूजिंग द मॉडल्स विच आर द बेस्ट, एंड जो भी अच्छे नहीं है आप उनको फ़ौरन हटा रहे हो, ठीक है। सो रैंडम, this should be stacking, so random stacking, so this is basically random grid search plus stacked ensemble। so stack ensemble basically उसका आइडिया ये होता है कि आपके पास कुछ बेस लर्नर्स होते हैं, these are very weak classifiers, ठीक है, with hyper parameters, and इनको आप एक साथ इन पर के फॉल्ट वैलिडेशन अप्लाई करते हो सारी बेस लर्नर्स पर, और जब आप इन पर अप्लाई कर लेते हो फिर आप एक मेटा लर्नर अप्लाई करते हो, ठीक है, जो उसका काम होता है कि ये इस स्टैक्ड ensemble को ट्रेन करना। सो यू हैव लॉट ऑफ डिफरेंट बेस लर्नर्स विच आर परफॉर्मिंग के फोल्ड वैलिडेशन, और फिर ये जो सारे के फोल्ड वैलिडेटेड लर्नर्स हैं इस पर मेटा लर्नर फिर अप्लाई होता है, एंड इट बेसिकली ट्रेन्स योर स्टैक ensemble। सो इट लर्न्स टू हाउ टू लाइक कंबाइन द आउटपुट फ्रॉम दीज बेस लर्नर्स इन एन ऑप्टिमल वे, ठीक है। And basically यही है कि stacking comes from this from taking cross validated predictions and squishing them into a new matrix for meta learners. So ensemble usually takes a long time to train, but अगर आपने पहले से cross validation कर लिए, so you've like done 80% of your work, and it's like training now is very cheap. And then you have random grid search per stacking, so you're generating different models using random grid, and then you're stacking them together. बट स्टैक ensemble सिर्फ दो केसेस में काफ़ी अच्छे चलता है, एक जब आपके बेस लर्नर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, एंड दूसरा उस केस में जब आपके पास सारे जो मॉडल्स हैं उनका अनकोरिलेटेड एरर है।
let's take a look at how H2O AML में क्या क्या चीज़ें चल रही होती है. सो जैसे हमने बात की थी imputation, वन हॉट encoding, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारी डेटा प्रेपरेशन की चीज़ें थी, ये भी यहाँ पे अप्लाई हो रही होती हैं. रैंडम ग्रिड सर्च लग रही होती है, मल्टीपल ensembles लग रहे होते हैं, अर्ली स्टॉपिंग यूज़ कर रहे होते हैं ये लोग, ठीक है, and multiple stack ensembles, custom hyper parameter space. You basically experts ने decide की भी होती है, and they're basically using a leaderboard ranking जिसके ऊपर basically ये है कि कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है. So the way how you use this is by writing h2.init train equals to h2.input file, ठीक है, and then you have your train.csv, then you have your AML H2O AutoML, and you're basically defining कि आपको कितने रन टाइम तक चलाना है. So max run time is like 600 seconds. And AML.train, so you're training your y data, your training frame is train जो आपने यहाँ पे define किया था, and then your leaderboard. So it's very simple, it's very easy. For binary classification, they're using AUC as a default metric for loss, ठीक है. बेस मॉडल्स इन्होंने सेट किए हुए थे, मैक्स मॉडल 10, अनसॉमल 2 जो इसकी एग्जांपल थी, एंड दीज आर लाइक सम थिंग्स, GBM and GLM and Mojo is something which I need to figure out what that is. Then we have another lecture on AutoML, and this basically tells you a little bit more about how, not how it's working, but like very very technical details. So फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो नॉर्मल डीप लर्निंग का जो आर्किटेक्चर होता है वो ये होता है कि आपने डेटा फेंका, एक्सपर्ट्स जो होंगे वो डिफाइन करेंगे कि आर्किटेक्चर क्या होगा, हाइपर पैरामीटर क्या होगा, एंड देन यू हैव योर डीप लर्निंग विच इज एंड टू एंड. However, AutoML is the true essence of end to end, because आप बस डेटा फेंकते हैं, and your meta learners जो हम अभी यहाँ पे बात कर रहे थे, they are basically optimizing, and then they are deciding कि कौन सा आपके पास hyper parameters होने चाहिए, कौन सा architecture होना चाहिए, and then this is being learned over and over again until you get a very nice model. So you can think of it as a black box optimization जिसके अंदर आप या तो reinforcement learning करते हैं, या आप random search करते हैं, या BaseNet apply करते हैं. BaseNet initially slow होता है as compared to random search, but then it becomes faster. And then you're basically training some alpha, which is your object, and then you're evaluating its performance. So हमारे पास AutoML के अंदर we have like three systems that we are going to talk about. One is your AutoVeca. This was built on JavaScript. The second is Auto Scikit Learn, and the third is your AutoNet. This is used for deep learning. So these are like three systems, and there are like 6 tips that they told you about that you should be using in your AutoML systems. So the first one is like parameterized ML framework. These were like using base Vecca ki 27 base classifiers and 2 ensemble methods. So what they were doing was they were optimizing their cross-validated performance by using Bayesian optimization, and they were doing this by just evaluating the good configurations of your CV. So it was only evaluating more folds on good configurations, and which allowed you to get like a 5 times faster tenfold. In your auto psychic learn, they were using different data sets, and they were comparing the old data set with the new data set, and then if they were very similar, then they were using the same configurations for the old data set into the new data set, and was like basically increasing its speed up again. So meta learning is using to warm start your base optimization. Then the third is your automated post hoc ensemble construction to combine the models Bayesian optimization and evaluate it. I'm not sure what this was, but this was basically allowing them to like reuse its data and improve its robustness. So then you have your AutoNet, which is for deep learning, and this was improving the CV performance. It was not working good on large data sets, but the way how they mitigated this was they were using subsets of data and then training on that, and they were also using like early stopping on this. And the last one that they were using was hyperband or successive halving. So successive halving is basically like running n configurations on some small budget b, and this budget could be the number of functions evaluated, the the um, uh, the evaluations evaluated, the number of data sets that you're using, or the number of epochs that you're using, and then they were iteratively you were increasing or doubling your budget by selecting the half of the best configurations. And hyperband is basically calling successive half iteratively with different models of n and b.
So they were using hyperband with Bayesian optimization, and they figured out that that is like a really good optimization trick that they were doing. So in summary, they were using Bayesian optimization to enable true end-to-end learning. They got large speedups across different data sets, subsets of data sets across data sets, when they were combining hyperband and Bayes optimization, and they were also doing online adaptation of architecture and hyperparameter. So online adaptation of architecture and hyperparameter is basically they were using one model, and then they were using like different hyperparameters with like wider architecture, adding a layer or adding a skip connection. This was done randomly, and then this model was being morphed into different models, and then you were training them, and then you were applying cosine annealing, and then you were selecting the best model, and then repeating this over multiple times. So this was like morphing your architecture and like online adapting to architecture and hyperparameter. So 6 points. First, you were parameterizing your ML framework, and you were doing this by getting better configurations on your CV by using Bayesian optimization. So you were only using the best. Um, so you were using it on the best configurations. Uh, you were only applying more k-folds on the best configurations. Then you were doing auto psychic learn, which is basically related to your meta learning to warm star basenet. So you were using old configurations on similar data sets, and then you were doing some post hoc ensemble construction by combining models. It was increasing your robustness and efficiency. Then you were doing some online adapting to network architecture and hyperparameter. Then you were it wasn't working really well on large data sets, so you were using small subsets of data sets, and you were also doing it on different epochs. And then you were doing hyperband, which is basically like you have your end configurations, your some small budget, and then you're like choosing the best configurations. Sorry, you're choosing the best configurations, and then you're increasing the budget on that. Okay, so that was AutoML. Next is association rule mining.